Arvind Kejriwal is all set to step down in less than 24 hours. At about 4:30 is when we're expecting that he will meet with the Lieutenant Governor and hand over his resignation letter, which means that once he steps down, he's going to perhaps put all of his energy into the Haryana election campaign as well. And the question that then arises is, will Kejriwal actually dent votes for the BJP and the Congress in Haryana? जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। After leaving the Chief Minister's chair, Arvind Kejriwal is expected to go full throttle in Haryana, where the Congress is confident of trouncing the ruling BJP. This may spell some trouble for the Congress, as the more AAP gains in Haryana, the more grand old party may lose. Delhi Congress leader and former Chief Minister Sheila Dikshit's son, Sandeep, has already questioned the intent behind Kejriwal's move. भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कोई 4-5 महीने पहले बताया था कि सिसोदिया जी जब छूटे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया? तो कहने के भैया क्या करें, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं। और मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि यह बेलेल सब होने वाली है। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं है? आप बिहार में क्यों नहीं है? आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी टारगेट होता तो जहां बीजेपी ताकतवर है वहां जाके लड़ते ना। The fears of a split in anti-BJP votes in Haryana are real for Congress. Sensing the threat, Congress's senior observer for the state, Ajay Maken, has appealed to voters to back only the grand old party. हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। और कांग्रेस को अगर वोट देना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देना है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी को पड़ना चाहिए। अगर कहीं भी और अगर वोट दिया तो उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। To arrest the possible split of votes, Rahul Gandhi wanted an alliance with the AAP in Haryana. Both parties had a few rounds of talks, but discussion collapsed over seat sharing. The AAP, which is contesting all 90 seats in Haryana, does not have enough strength to win the election on its own. But if it gets some traction, that would be enough to damage the Congress's prospects on several seats. Not just AAP, the INLD and JJP may also split anti-BJP Jat votes, another core base for the Congress. The move to step down by Arvind Kejriwal, the supremo of the Aam Aadmi Party, is being seen as a move to revitalize the Aam Aadmi Party, especially at a time where they have actually faced setbacks in Lok Sabha and a slide in Punjab. There is also the other big issue of denting the images of senior leaders of the party as far as corruption is concerned. A poll plank which was often utilized by Aam Aadmi Party, the Kattar Imandar. Meanwhile, it is yet to be seen whether this political gambit is going to dent any other party, or is it going to be a shot in the arm for the Aam Aadmi Party in Haryana. With camera person Chandi Ram, this is Kamaljeet Sandhu in Chandigarh for India Today. And tomorrow we will know who Arvind Kejriwal's successor will be. Tomorrow, Arvind Kejriwal will step down as the Chief Minister of Delhi.